How to crack SNAP examination. Let's go section by section. 60 minute, 60 questions. I call it the easiest exam in India. Disclaimer. If it's easy for you, it's easy for Aniket, it's easy for Tanmay, it's easy for Stuti as well. आज मैं आपको पिछले साल के 2 स्लॉट का पेपर का ओवरव्यू बताऊंगा क्या क्या होने वाला है. पहले इनके मुंह सुनेंगे because now they know more about SCMHRD than I know about it for sure. And now they've cracked the examination. I cracked Symbiosis, SIBM, मैंने खुद अप्लाई किया था यार 2008-9. Shit, I'm old, but yeah. तो बहुत पहले मैंने खुद क्रैक किया था, तो इसलिए अप्लाई तो पक्का करना चाहिए. बट लेट्स टॉक अबाउट प्रिपरेशन. अनिकेत यार, ये स्टूडेंट फ्रेंडली जेन्युइनली इजी है कि हमें रैंडम हवा बनाया हुआ है? नहीं sir. As we talk about SNAP examination, it is a student-friendly examination. Talking about that, I think the main two factors is the sectional cutoff and the sectional timer, which it was easy for me as I said earlier. Like my sectional cutoff में थोड़ा issue होता था, so like this helped me. Apart from that, I think section-wise approach is important क्योंकि like sectional marks भी then important and not only the overall marks. Sectional marks में क्या होता है? जैसे for me in the quant section, arithmetic मेरा I was confident in arithmetic. For the algebra part, I think I was not that confident. And in the like in the other sections also, I was like pretty good. So अगर section wise approach करेंगे ना, तो we will like finish half of the paper in like 20-25 minutes and we'll have 30 questions left and for that 35 minutes. जिस एरिया में कम कॉन्फिडेंट है उसमें अगर ज्यादा टाइम रहता है हमारे पास तो इट्स इजी फॉर अस. वहां पे उतना लाइक टाइम मैनेजमेंट हम लोग से हो पाता है. हम लोग उतने लाइक वी डू नॉट पैनिक दैट मच. It was I like planned in this way. Awesome, that's great. Stuti, how about you? Sir, so I had put my eggs in very different baskets. So I had applied for all the entrance examinations and from the start itself मेरे को पता था कि my quants is not that well and I'm good at BA. तो ये हमेशा से sorted था. And SNAP worked for me because of the fact कि again sectional cutoff, sectional timer नहीं है. तो I played that way in the SNAP exam. मैंने अपना पूरा strength डाला, VA को बहुत अच्छे से करा and then quants के लिए थोड़ा extra time दिया क्योंकि मेरे को पता ही मेरे से नहीं होने वाला है. जितना आता था उतना attempt करा, थोड़ा extra पढ़ा. तो वो मेरी strategy रही थी पूरे time से and definitely मैंने बहुत mocks दिए. तो yes. झूठ मत बोल, मैं चेक करूंगा डैशबोर्ड पे लॉगिन करके. आप चेक कर लो सर. सुपर यार, सुपर. Hi, I'm Sejal Sharma. सौरदीप चौधरी. मेरा CAT percentile 99.20 था. Watching your videos and I kept watching them and the motivation and your energy was just too high that it gave me the motivation that I can do it. I'm very grateful to you because आपके मैं सारे lectures बैठा हूँ. CATKing का जो इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा है, एकदम CAT की तरफ. क्या बात है? मैंने I used to feel वो आपका मोटिवेशन देख लेती थी. पापा मेरे से बड़े फैन है. क्यों भाई? क्योंकि जब मैं स्पीकर पे पढ़ता था या आपके वीडियो देखता था तो बोलते हैं ये बंदा ना पढ़ाते हो सब मोटिवेट करता है तुम्हें. वो हवा भरती रहनी चाहिए हमेशा गाड़ी में. Thank you so much sir and I would again like to thank all of you as the CATKing family. It's been a great experience. Hit the bell icon.